Good evening, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the line by line explanation for the lesson Prithvi ko chada bukar, lesson 4, class 6, Vaani Hindi Patmala. Hope you would have seen the previous video, the line by line reading of the lesson. If not, I'll give the link in the description box. You go and check the video and check your pronunciation. If you're still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, then please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. Prithvi ko chada bukar. So this is all about global warming. Do you know what is global warming? How to save ourselves from global warming? What are the side effects of global warming? Why global warming occurs? So what is the gas that is involved in the global warming? Lot of science questions, right? But this you have studied in class 5 itself. If not, go and check in the internet what is global warming, why it is happening, what are the side effects of global warming, and how we have to save ourselves from global warming. This is the activity for you. So this lesson is all about addressing the issues and how we have to save from global warming. So now what is the objective? We'll see why we are going to read this lesson. पृथ्वी पर पर्यावरण के नुकसान से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराना. So you have to be aware of the side effects of damaging the environment, the losses which you are bringing to the nature, to the environment. What will be the side effects? We have to be aware. स्वच्छ पर्यावरण के प्रति बच्चों का ज्ञानवर्धन करना. So the clean environment, how the clean environment has to be, that you don't know, right? Because we are already living in a unclean environment, so you should be aware of the clean environment. So you have to motivate yourself to know and practice that. प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करना. So you have to get motivated to use the natural resources in a wiser way and also to save the and protect the environment. संरक्षित means to save. प्राकृतिक संसाधनों is natural resources. So what are the natural resources? Of course, water, air, fuel. So all are natural resources. So we have to save and use the natural resources wisely. We should not waste our natural resources. Electricity is one thing, right? We all have to be very careful of using the electricity. Now, objective of this lesson is to teach all these things to the students. Now, various competencies. So you should be able to bring yourself to that skill, right? So that you will be able to understand the topic, you know what we have to take. So what are the competencies you should improve to make yourself better? स्वलेखन करने में सक्षम हो सकेंगे. You should be able to write on your own. भाषा के विविध रंगों को समझ बेहतर हो सकेंगे. So you should understand the different ways of language. So maybe the grammar part. क्रिया शब्द एवं क्रिया के काल का महत्व समझेंगे. So what is action word, verb, and the tense of the kriya you will understand. So when it is happening, present tense, past tense, future tense, present continuous, all these things you will understand. So these are the competencies levels which you have to improve yourself in this lesson. What is the learning outcome? Why I am reading this lesson? So the default learning outcome from this lesson is to improve your pronunciation, to check the vocabulary, to improve your spoken skill, to improve your writing skill. Apart from that, what we are going to learn is to learn about the topic, what is environment, what is global warming, how we have to save the environment, what are the activities we have to not do, we should do, what are the side effects, all these things you have to understand about this topic. So पाठ के विषय वस्तु और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं so that you can able to express your thoughts. पेड़ पौधों के महत्व को समझते और उनके उपयोगिता पर चर्चा करते हैं. So you should be able to discuss and understand the importance of trees and plants. पढ़ी गई सामग्री पर बेहतर समझ के लिए प्रश्न पूछते हैं. So whatever is you are seeing, things that is there, you should be able to ask questions. So this should be the learning outcome. So this lesson is all about save environment, right? So as 21st century kids, you should be able to know what is the about the health, about the global awareness should be there, life skills should be there, values should be there. You should be able to think critically. You should be able to solve the problems. These default things you should learn or you should be able to incorporate. So now I have few questions for you. In your house, do you discuss about earth? Earth pati discuss panvingla.
Yes, we do discuss about earth, right? In a heat previously it was not like that, the temperature was not so high, all those things we discuss. What everyone around you says about that, isn't it? In earlier days we didn't have so much of pollution, we didn't see so much of vehicles on the road, it's not everywhere, it is crowded now, and the forests are all turning into buildings and apartments. These are the few things which we get from the elders of our house. Have you used the natural resources? Natural resources use பண்ணிருக்கீங்களா? Yes, of course we will be using, right? Water is a natural resource, air is a natural resource, electricity is a natural resource, gases, LPG gas, petrol, diesel, all the fuels are the natural resources. So we have to use our natural resources wisely so that we can give that natural resource to the next generation. Ramle use பண்ணிட்டு கத்தம் करके नहीं जाना. We should not keep a full stop for that. We should be able to give to the next generation. So what will you do to reduce the fever of the earth? Temperature reduce பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? The foremost thing is to reduce pollution. We have to keep our environment clean and we should plant more trees. These are the things which we can do to reduce the temperature around us. Have you ever heard from the farmers from your village, like this time we didn't expect so much of rain and it has destroyed the crop, or this time we didn't accept so much of dryness that we could not plant anything, the crops didn't come up? Yes, every year we listen this or that from any corner of our world, right? Why this happens? All because of this global warming, the temperature. So global warming, why the temperature is increasing suddenly? What is the scientific reason behind it? Do you know? The carbon dioxide which is released by the various factories, vehicles, or when we burn it, all this carbon dioxide reaches the atmosphere and it has to escape to the space, isn't it? But what happens is, while we are burning, this rampant carbon dioxide are not escaping to the space. Instead, they are making a layer around the earth, and the temperature, the sun's radiation is not able to go away. Now, heat stays around the earth, keeping the earth warmer. So, this is what happened in global warming. So, what activities have made this global warming? Human activities, isn't it? Pollution from factories, increasing vehicles which give smoke, cutting of the trees, so the rains are reduced and the carbon dioxide is staying in the atmosphere, making the temperature higher. So what are the activities which we can do? We can plant more trees, we can say no to the plastic, we can reduce using our chemical things, reduce using the natural resources, and we have to recycle. These are the things which will affect us to reduce the global warming. So in this lesson, we are going to learn about the human activities which is destroying the natural resources and creating few problems. We have already disturbed the nature, and what are the steps which we have to take to keep the earth safe is what all about the lesson. Now let's go and read the lesson and understand. This conversation based lesson. So the first scene is like this. अनुपमा अपनी दीदी के साथ विद्यालय से घर जा रही है, उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ है. So Anupama is going back to home along with the sister and her face is so dull. So this is the scene 1. Now Didi is elder sister, Anupama is the name of the character, and the conversation happens between these two. Didi, क्या हुआ अनु, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? What happened अनु? You are looking so sad today. उदास ना sad. अनुपमा, नहीं दीदी, बस ऐसे ही मेरा मन थोड़ा उदास है. So no दीदी, not like that. Just like that, I am sad today. See the comma and exclamatory mark and full stop. So when you are addressing someone, you have to put comma, and if something is told very expressively, then you have to put an exclamatory mark, and at the end of the sentence you have to put full stop. Did you observe here? This is a conversation. So conversation yaar pandranga the name, and what they are conversing we are putting after this colon. So colon kapram irukadla you don't have to put a quotation mark that this is said by this person. Poda thevilla. This colon will make us to understand that this sentence is told by this person. So you have to put conversation after the name, colon, and then the dialogue which has been told by the person whose name is written on the left side. Understood? This is the pattern of writing a conversation. So this you have to follow. Next, Didi, अरे बताओ तो क्या हुआ? Tell me now what happened. A very good expression the Didi is asking. Tell me now, எனக்கு சொல்ல அப்படின்றாங்க.
अनुपमा, आज अध्यापिका ने बताया कि पृथ्वी को बुखार आ रहा है. टुडे माय टीचर, अध्यापिका इज द लेडी टीचर हु टोल्ड दैट पृथ्वी इज गेटिंग फीवर, द अर्थ इज गेटिंग फीवर. उसका तापमान बढ़ रहा है, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. तापमान मीन्स टेम्परेचर. अगर पृथ्वी ऐसे ही बीमार रही, इफ द अर्थ रिमेन्स इल लाइक दिस, बीमार ना इल, तो हम सब उसके साथ बीमार हो जाएंगे. वी ऑल्सो विल बिकम इल लाइक अर्थ. So the conversation is that Anupama is very sad and Didi is asking what happened. She says the reason that today my teacher told that temperature on the earth is increasing and the earth is very ill. If the illness continues for the earth, it will also create illness for us. Didi, ये तो सच में चिंता की बात है. So this is really a worryable thing. So யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தான், வருத்தப்படுற விஷயம் தான். ஸோ சிந்தா இஸ் வரினஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஏ வரிங் திங் ஒன்லி. अनुपमा, दीदी सी आफ्टर एड्रेसिंग द नेम आई हैड टू पुट ए कमा, अल्पविराम. अध्यापिका ने कहा कि यदि बारिश नहीं होगी तो गर्मी बढ़ेगी, इससे जीव जंतु और हम सब खतरे में पड़ जाएंगे. सो शी इज टेलिंग टू द सिस्टर, अध्यापिका टोल्ड मी दैट इफ रेन इज नॉट कमिंग द टेम्परेचर विल इंक्रीज. बढ़ेगी मीन्स इंक्रीज. जिससे इससे बिकॉज ऑफ दिस जीव जंतु, द लाइफ लिविंग लाइफ, और हम एंड वी everyone will get into the problem. खतरे में पड़ जाएंगे means we will have some problem. Next scene. So what the scene details is given in this bracket. Okay. So the next scene is, घर पहुंचने पर अनुपमा और उसकी दीदी दादाजी के पास बैठ गई. दादाजी टीवी देख रहे थे. समाचार में बताया जा रहा था कि चेन्नई में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और लातूर में बारिश न होने के कारण सूखे की हालत हो गई है. दादाजी समाचार देखकर परेशान हो जाते हैं. सो हियर द व्हेन एज सून एज दे आर गेटिंग इनटू द हाउस, द grandfather is watching the TV, news is going on, and in the news it is told that in Chennai the flood is going to occur, and in Latur because of no rain the dryness drought has come. After hearing this, Dadaji becomes so worried. So चेन्नई में बाढ़ मीन्स फ्लड, लातूर में बारिश ना होने के कारण सूखे मीन्स ड्रॉट. ओके, सो सी द डिफरेंट प्लेसेस. इंडिया इज हैविंग टू डिफरेंट क्लाइमेट्स वेर वन इज सफरिंग विथ लॉट ऑफ रेन, वन इज सफरिंग विथ नॉट रेन. सो हियरिंग दिस द दादाजी इज गेटिंग वरीड एंड दिस इज द सीन नाउ. दादाजी, कहीं भी असमय की भारी बारिश से बाढ़ आ जाती है. असमय ना अनटाइमली हेवी रेन वंदावे द फ्लड विल कम. पानी शहर के अंदर घुसने से लाखों लोगों का जीवन संकट पड़ जाता है. एंड द वाटर दैट एंटर्स इनटू द सिटी, द लैक्स ऑफ पीपल विल गेट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ. संकट ना प्रॉब्लमेटिक आएडो. कहीं लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं. एंड सी समवेयर द पीपल आर डाइंग फॉर ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. और कहीं प्रलय मची हुई है. एंड सी इन सम अदर प्लेस प्रलय में आयरची द डिस्ट्रैक्शन हैज हैपेंड. अनुपमा, हाँ दादाजी, आज हमारी अध्यापिका ने भी हमें यही बताया कि मौसम बदल रहा है. अनुपमा इज टेलिंग टू दादाजी, यस दादाजी, आफ्टर एड्रेसिंग कमा शुड बी देयर. टुडे माय टीचर ऑल्सो टोल्ड मी द सेम दैट द क्लाइमेट इज चेंजिंग. हमारी पृथ्वी बीमार हो रही है. आवर अर्थ इज गेटिंग इल. दादाजी, पृथ्वी कैसे बीमार हो सकती है? एंड ही इज आस्किंग हाउ ग्रैंडफादर द अर्थ कैन बिकम सो इल. दादाजी, बच्चों, ऐसा पृथ्वी के अधिक गर्म होने के कारण हो रहा है. सो दिस इज हैपनिंग ऑल बिकॉज द अर्थ इज बिकमिंग वार्मर. अधिक गर्म ना நிறைய हीट இருக்கிறதுனால. वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मानव क्रियाकलापों से पृथ्वी गर्माने लगी है. सो वैज्ञानिक, द साइंटिस्ट आर गिविंग द चेतावनी, अलर्ट கொடுத்துட்டே இருக்காங்க बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी. मानव क्रियाकलापों, ह्यूमन एक्टिविटी, द अर्थ इज गेटिंग हीटर. गर्माने लगी ना, इट बिकम सो वार्मर. ये मौसमी बदलाव इसी का परिणाम है. सो द परिणाम, द एंड रिजल्ट, क्लाइमेटिक चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. अनुपमा, दादाजी, इसका कारण क्या है? सो शी इज आस्किंग व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ग्रैंडफादर. दादाजी, पेड़ों को काटा जाना, कटिंग ऑफ द ट्रीज, प्रदूषण फैलते कारखानों की बढ़ती संख्या, द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आर इंक्रीजिंग विच आर ऑलरेडी क्रिएटिंग पोल्यूशन. सड़कों पर बढ़ता काला धुआं और ध्वनि प्रदूषण. So on the roads, if you see, you can see a black smoke and also sound horns, right? Vehicles moving here and there. So sound pollution is also there. Smoke is also getting added to the environment. ये सभी इसी के कारण है. This all are because of this.
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. वायुमंडल इस एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी मात्रा ना क्वांटिटी daily every day it is increasing. So surya from the sun the radiation is coming, right? That heat it keeps around the earth itself. सूर्य से आने वाली गर्मी को द रेडिएशन है पृथ्वी पर ही रोक लेते, इट डजंट अलाउ इट टू गो टू स्पेस. इस प्रकार पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है. एंड बाय दिस ईच डे एवरी डे द अर्थ इज गेटिंग वार्मर. यदि वृक्षों को काटने से नहीं रोका गया, इफ वी आर नॉट स्टॉपिंग द कटिंग ऑफ ट्रीज, तो हमें कई प्रकार के प्राकृतिक संकटों नेचुरल डिजास्टर्स प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. वी कैन फेस द प्रॉब्लम नेचुरल डिजास्टर्स वी हैव टू फेस इफ यू आर नॉट स्टॉपिंग cutting of the trees. Let me show you few images of global warming for you to understand. See, this is the global warming. The earth is having the high temperature. Radiation that comes, the radiation that comes from the sun, it has to reflect back. But due to the carbon dioxide layer which is there, it is not allowing the air to move to the space. Hence, the temperature here is increasing. How much of smoke is coming from this industries? Steps to stop global warming is not to cut trees, not to burn more, not to use the natural resources. Electricity waste pannakoodadu. We have to stop pollution, we have to save water, and we have to plant more trees. These are the few steps which can stop global warming. The potential risk we have, the global warming potential, the sun rays are there, but the sun rays which has to go out, it's trapped here itself. Okay. If it is a normal carbon dioxide, then this carbon dioxide will easily escape to the at space and the radiation will be not more, so romba heat agad. So earlier we had with normal carbon dioxide, right? So whenever the solar radiation is there, reheated heat all gets escaped to the space because carbon dioxide is not getting trapped. But here nowadays what happened, the carbon dioxide is the burnt one, right? So which is giving a, which doesn't allow the radiation to go. The radiation is getting trapped here itself. The radiation is getting trapped here itself and causing the earth's surface warmer. This is what is happening. So if you burn more, the more carbon dioxide will be there. Let's continue with the lesson. So पेड़ों को काटने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है. So when you are cutting the trees, the balance, the environmental balance, संतुलन बिगड़ गया means it has been disturbed. समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है. So even the sea level is also increasing. असमय की बरसात से कृषि पैदावार नष्ट हो सकती है. असमय की बरसात में अनटाइमली रेन can destroy the crops, right? Sometimes we don't want the rain, but rain comes and it makes a flood or it affects the crops. अनुपमा, दादाजी क्या हम सब मिलकर पृथ्वी को ठीक नहीं कर सकते? So she is asking the grandfather, what we cannot join together and do something to reduce this effect? We cannot save our earth. Can we not repair our earth? Like that she is asking. दादाजी, बेटा हम सभी को मिलकर निश्चय करना होगा. Yes, we have to join together and determine. कंडिपा we have to do it. No other go, right? कि हम अपनी धरती माता को पहले जैसा स्वच्छ और सुंदर बनाएं. So as it was before, we have to make our earth clean and beautiful. This we have to do for sure. So the grandfather is explaining things and there he is also contributing along with the sisters in planting the trees. So दीदी, तो हम कौन से ऐसे काम करें जिससे हमारी पृथ्वी पहले जैसे सुंदर और स्वच्छ हो जाए? So what are the things that we have to do that the earth becomes like before beautiful and clean? दादाजी, हमें बिजली, पानी आदि को आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए. So electricity and water we have to use and spend, खर्चना spend पड़ना according to the need. आवश्यकता अनुसार according to the need only we have to spend the electricity and water. ये सभी वस्तुएं हमें पृथ्वी से ही किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है. सो ऑल दिस थिंग्स नेचुरल रिसोर्सेज विच गेट फ्रॉम द अर्थ ओनली इन एनी वेज. सो वी हैव टू सेव अवर नेचुरल रिसोर्सेज. पृथ्वी को हम सब ने घायल कर दिया. वी हैव इंजूर्ड द अर्थ. घायल ना, इंजूर्ड द अर्थ. उसे बहुत चोट लगी एंड शी इज इंजूर्ड नाउ. द अर्थ इज इंजूर्ड बैडली विद द ह्यूमन एक्टिविटीज़. अच्छा अनुपमा बताओ, नाउ यू टेल मी अनुपमा, जब तुम्हें चोट लगती है, व्हेन यू आर गेटिंग injured, when someone falls down they get injured, right? So माँ क्या करती है? What does the mother do? She'll come and clean the wound and apply ointments, right? अनुपमा, दादाजी तब माँ चोट पर दवाई या मरहम लगाती है. So she keeps a medicine or ointment on top of that.
दादाजी, इसी प्रकार यदि पृथ्वी का शरीर पेड़ पौधों से ढका रहे तो उसे चोट ही नहीं लगेगी. सो इफ द अर्थ इज ऑल सराउंडेड विद द मोस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल ओवर देन द अर्थ विल नॉट गेट हर्ट. அது மாதிரி சொல்கிறாரு. हमें प्रतिवर्ष कम से कम 10 पौधे अवश्य लगाना चाहिए. सो एवरी ईयर मिनिमम वी हैव टू प्लांट एटलीस्ट 10 ट्रीज. और केवल लगाने ही नहीं, जस्ट मரம் வச்சுட்டு போயிடுறது மட்டும் இல்லை, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट प्लांट, राइट. बल्कि उनकी देखभाल भी करनी चाहिए. वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट प्लांट. सो वी अर्लियर वी हैव सीन मेनी पीपल हु यूज्ड टू कीप द प्लांट बट दे डोंट हैव द टाइम टू टेक केयर ऑफ इट. So they just plant it and they'll go off. But we should not do like that. We have to plant it and we have to take care of it that it grows well. Anupama, उत्साहित होकर दीदी से, with so much of excitement, she is telling to this दीदी, अक्का किटे सोल रहा दीदी चलो क्यों ना हम आज से ही पौधा लगाना शुरू कर दें. So why not we start keeping the plant from today itself? Come, let's go, sister, like that. She is telling with an excitement. ताकि वह कल एक बड़ा पेड़ बन जाए. सो दैट टुमारो इट विल बिकम ए बिग ट्री. हमारे घर के बाहर कितनी खाली जगह पड़ी है. इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस नियर बाय वी हैव लॉट ऑफ मेनी ओपन ग्राउंड. सो गो लेट्स कम दीदी, वी विल गो एंड कीप द प्लांट्स सो दैट इट विल बिकम ए बिग ट्री टुमारो. दीदी हाँ क्यों नहीं, येस वाई नॉट. अच्छा काम करने में देरी कैसे. सो நல்ல வேலை செய்யறதுக்கு ஏன் லேட் பண்ணும். वाई वी हैव टू डिले टू डू सम गुड डीड्स. दादाजी चलो मैं भी तुम दोनों की मदद करता हूँ. ओके लेट्स गो, आई विल ऑल्सो हेल्प यू बोथ. अनुपमा, दीदी आप गड्ढा खोदो, मैं पौधा लगाती हूँ. सो शी इज टेलिंग टू द सिस्टर, यू मेक द पिट, गड्ढा ना पिट, आई विल कीप द प्लांट. दीदी ये लो तुम पौधा लगाओ, मैं पानी छिड़कती हूँ. ओके यू कीप द प्लांट, आई विल स्प्रे द वाटर. छिड़कती मीन्स ना तन्नी तेलिக்கிறேன் अर्थम. आई विल स्प्रिंकल द वाटर्स. दादाजी आओ ईंटों से इसकी सुरक्षा करें विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स. ईंटों ना विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स विल प्रोटेक्ट इट. सुरक्षा ना प्रोटेक्ट करो सो दैट ग्रेजिंग डजंट हैपन और नो वन विल स्टैम्प द प्लांट, राइट. ऐसा करने से हमारा पौधा सुरक्षित रहेगा. इफ़ यू डू द प्लांट विल बी प्रोटेक्टेड. अब प्रतिदिन इसमें पानी देना एंड एवरी डे वी हैव टू कीप वाटर. ये पेड़ पृथ्वी के बुखार को उतारेंगे और हमारी ये पृथ्वी पहले की तरह स्वस्थ और सुंदर हो जाएगी. एंड दिस ट्रीज विल रिड्यूस द टेम्परेचर एंड इट विल बिकम एज ब्यूटीफुल एंड क्लीन लाइक बिफोर. सो पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ स्लोगन. यू कैन राइट सम स्लोगन रिलेटेड टू सेव एनवायरनमेंट. सो कागज बचाओ पेड़ बचाओ, यू कैन राइट 1 or 2 फ्रॉम सेलेक्टिंग फ्रॉम द इंटरनेट. चरित्र प्रधान शब्दावली. सो वोकैबुलरी व्हाट वी हैव टू लर्न इज चेतावनी इज अलर्टिंग, सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात. सो अलर्ट பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குற மெசேஜ் और कंटेंट. संकल्प इज दृढ़ निश्चय और इरादा, वेरी डिटरमाइंड और द थॉट्स. सुंदर इज खूबसूरत, ब्यूटीफुल. Hope you would have understood the lesson. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section. Surely reply back. Thank you, students.